आई हैव बीन रेगुलरली गोइंग टू जलंधर, लेकिन आज कुछ ऐसे लगता है उस घर के लिए भी ना एक अलग अट्रैक्शन है, एक अलग बिल्कुल सारा माहौल ही अलग है बिल्कुल। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੀਜੀ ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। नर्वस नहीं बेटे, नर्वस नहीं मैं, इट इज़ लाइक गोइंग बैक इनटू द पास्ट। नर्वस नहीं हूँ, सब लोग आप साथ हो तो फिर नर्वस का है। One winter, I lived in a glass jar, while life flowed all around. Other people lived and laughed and fought, and went to work and hoped. Desperately seeking the sun, frozen to the bones, I would momentarily be awestruck at so much living. But soon, the wonder would freeze to a hard crystal. I would feel just too tired. Vast spaces of emptiness welled up inside. Brittle, blinding brightness outside. Had Papa been here, we would have gone for long walks in the sun. On the way, he would have recited poetry. Mir, Ghalib, Josh and Faiz. And the cold crystals might have melted into an easy flow of words and laughter and sunshine. But Papa is no more. And with Mummy, it is different. I have learned from childhood to maintain a safe distance from my mother Manorama when she is busy. हेलो, हाँ अभी तो ये लिख रही हूँ, जूझ रही हूँ, सब लिख रही हूँ आर्टिकल। फिर जाऊँगी ना वो खाना सारा का लेके जाऊँगी वहाँ उसके घर। मैंने वो मैसेज था, फैक्स मैसेज भेज दिया मंगल सिंह अन्ना, ये ले मेरा पर्स ला।
वो मटन इन्होंने और कुछ लाना है? A journalist, a mother, and now a grandmother. हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? Her time is the present, अच्छा, precious, अच्छा। productive, practical. To be guarded sternly from intrusions judged irrelevant and indulgent. My time, however, was at a standstill. Moving out into the present seemed possible only by going back into the past. Perhaps my mother understood this, or perhaps her discomfort with inertia spurred her on to make me do something, or perhaps she had reasons of her own to look back. But in a surprising gesture, she agreed to take time off. And after an interval of nearly 12 years, she, along with her sisters Vijay, Santosh and Jyotsna, visited their brother Ashok at their mother Sita's house in Jalandhar. काफी ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੀ ਨਾਲ ਹੈ चाय पहले नाश्ता के चाय नहीं एक ही बार जो कुछ भी है पहले चाय आशा ऐसी हुआ करती थी आशा बहन जी बहुत पतली सी नहीं आशा को मोटी है बहुत ज्यादा वो सच है लाइक महारानी गायत्री देवी ऑफ जयपुर ये तो है ये थी निकाल दे सरवाला घोड़ी के पीछे बैठा था ये महल वैसा ही है बिल्कुल वैसे का वैसे बिल्कुल वैसे का वैसा अंदर से तो इन्होंने कर लिया है छत थोड़ी डैमेज हो गई थी तो हमने पता क्या किया अंदर 11 फुट पे और निकाली है बहुत अच्छा लग रहा है पक्की हो गई गुजारा लाख साफ कर लिया है अच्छा का वो भी तो है स्वतंत्रता सेनानी वो जो उनके ताम्रपत्र हाँ हाँ ये है स्वतंत्रता के 25वें वर्ष हाँ ताम्रपत्र के की अवसर फोटो पर तो जरूर होनी चाहिए संग्राम में स्मरणीय योगदान के लिए नाश्ता कर बैठे ने ठीक है ना चीनी डालनी है गवर्नमेंट अकाउंट नहीं बीजी बॉजी सब लोग ਅਸੀਂ ਕਾਂਗੜਾ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਾਤਾ ਸੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਛਤਰੀ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ हे भगवान रक्षा करो हे भगवान बारिश का करो छतरी जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये भी कहन देखो थोड़ी प्रार्थना सुन ली है कट गई बारिश मैं और संतोष ना कांपते हुए ਅਸੀਂ कहिए हे भगवान रक्षा करो भैन जी नाल आप छतरी जा रहे शोकी मामा कहाँ थे? नहीं अशोक तो बहुत छोटा सी छोटा सी ना ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਪਰ ਸੁਸਤ ਮਾਸੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ये तो चंडीगढ़ से आई है नहीं She is BG's most glamorous daughter. क्योंकि मैं मेरी यू मे बी नेक्स्ट ईयर कर दो वही मैंने कहा नेचुरल करते हैं नहीं तो करेंगे सबके पीछे इस साल का तो हो गया That winter belonged to Sita. Even though I barely remember my grandmother, Sita Devi has always set the standards for achievement in our lives. Sita is what my mother wanted to be, what she hopes I will be. Sita's memory
an array of milestones. Sita took active part in the struggle against colonialism. Sita was a campaigner of women's rights and a trade unionist. After independence, Sita was elected member of the Punjab Legislative Assembly. And when she died in 1973, Sita was a serving member of the Union Parliament. For my mother, perhaps, the most significant marker of her memory is the Quit India movement, 1942. When a 6-year-old girl stepped inside the margins of history in search for her mother's home. ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਔਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਭਵਨ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਾਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਬਸਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਔਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਬੀਜੀ ਨੂੰ 105 ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਟੇਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀਟਾ ਦੇਵੀ ਕਹਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। किसी ने कहा कि वो तो बीमार है ऊपर, तो सीढ़ियाँ चढ़ के वो ऊपर आए। बाबूजी भी बैठे थे, तो बाबूजी ने उन्हें पूछा कि बाबूजी का ना ही सीगा खैर, ही सेड यू आर अंडर अरेस्ट। बीजी कहते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ तुम्हारा नाम सीता देवी? बीजी ने कहा हाँ। सेड यू आर आल्सो अंडर अरेस्ट। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਔਰ ਮੋਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ मैं और भैन जी रह गए। अच्छा, एक बार क्या किया, हर एक लेडीज ने, किसी ने कहा मुझे भगवे रंग का मैंने कपड़े सिलवाने हैं, वो आ गया। किसी ने कहा मुझे वाइट चाहिए, किसी ने कहा मुझे ग्रीन चाहिए। वो तीनों कपड़ों को जोड़ के तिरंगा झंडा बना लिया। एक तिरंगा नहीं, ढेरों तिरंगे और सलवारा कमीज़ां भी तिरंगे ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੀਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ ਸਭ ਤਿਰੰਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਖੁਫੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ यूनियन जैक उतार के उत्थे तिरंगा लहराना है। इस तो वड्डी तो कोई वड्डी गल हो भी नहीं सी सकती इनकलाब। गणतंत्र दिवस एक महान पर्व हमारे देश का। जड़ी सब तो तकड़ी औरतां सी, लंबे लंबे टपकातियां, फिर उन्होंने ना भी ओदी सीढ़ी बनाई मीनार जिस तरह करके। बीजी भी उत्थे विच सीगे, तकड़े सी करके वो जी चढ़ते चढ़ते उत्थे तक पहुँच गए। और सब तो उपर जिहड़ी सब तो पतली सी वो दिल्ली दी बहुत नोन सी फ्रीडम फाइटर मेमो बाई, पतली सुक्की, उन्होंने चढ़ के उन्हें वो झंडा लहराता। ते इन्हों ने फिर गाना शुरू कर दिता कि नातवानों पर ये माना जुल्म ढा सकते हो तुम, बेकसों को खून के आंसू रुला सकते हो तुम, नाम पर इंसाफ के गोली चला सकते हो तुम, दिल से आज़ादी का जज्बा क्या मिटा सकते हो तुम। मैं तो जेल में काफ़ी महीने रही थी। बिलीव मी, जो हम डिप्राइव्ड माँ का जो अटेंशन थी, लव था, अब वहाँ पे तो बीजी ने कहीं मीटिंगों में नहीं जाना था ना। बीजी ने तो इतना सुंदर बना रखा था, अपनी साड़ी को फाड़ के उसमें पर्दा, मुझे अभी तक याद है, वो लगा रखे थे। फिर ये है कि भाई एक तखत था बड़ा, मुझे याद है, उसमें
बेड कवर डाल के, और तो और गिलास में ना पीतल का ही गिलास था, हम जाते थे और जंगली वंगली फूल, हम तो सारा दिन घूमते थे मैं और अशोक। जो दूध मिलता था बीजी को हिस्से का, वो बेचारी पीती भी नहीं थी, जमा कर लेती थी उसका ना, फिर कभी दूसरे या तीसरे दिन हमें खीर बना लेती थी। मुझे कभी नहीं भूल सकता, सबा जिंदगी भर में नहीं भूल सकती, जब मैं अपनी माँ की गोदी में चिपटी हुई थी और वो औरतें आके उन्होंने मुझे खींचा था। मुझे लगता था कि मैं कभी ना ये छूटे, लेकिन जब उन्होंने खींच लिया और फांसी की कोठी से बाहर निकाला, मुझे वो मैं रोती गई जेल के फाटक के बाहर। I have never lived away from my mother. Surrounded by my cats and flowers and bookshelves, I continue to live in one portion of her house. She prefers to live in a more remote section. Seeking her is an endless task. Sometimes I am able to find her, but most times I keep searching. ये कहाँ की है? ये है दिस वाज समवेयर, आई डोंट नो, आई थिंक इन 59 और Mummy, remember how I hated you to wear the sleeveless? हाँ, तुम नहीं कहा था कि Oh, I कभी नहीं couldn't wear पहनना it. है। I also didn't like you wearing पर it. वो एक ही था, फिर उसको दे दिया किसी को, पहनना ही नहीं फिर कभी। बहुत ढंग से साड़ी पहनी है। हाँ, तो एक जमाना था मैं ढंग से पहनती थी, बाल भी ये ढंग से कौन-कौन है बनाती यहाँ थी। ये तो खैर नासिर हैं, ये प्रेम भाटिया, ये पास्ट अवे, एंड पापा पीछे। इनके नाम ना अब मुझे भूल रहे हैं। ये तो ये नासिर के दफ्तर के बाहर की है। Really sweet. ये तो शक्ल बदली तो नहीं ना सेम। ना। ओहो, शिमला। ये शिमला में वी वर वॉकिंग ऑन मॉल समिट पार्क, इंडो पार्क समिट के लिए। तो आप दोनों ही गए थे? हम छोटे थे घर पे। हम दोनों गए थे, left at home. टैक्सी एंड ये हमेशा कहती नहीं थे तो बाहर तुम कहाँ जा रही हो, मैंने लिपस्टिक क्यों लगाई है, हाँ, वो तो इनसिक्योरिटी होती है। हटाओ इसको। और अगर घर में बैठती थी तो मम्मी अब तुम हाउसवाइफ ना बन जाना। ये फेमस है लक्ष्मण झूला। और I whether the Lakshman Jhula is famous or we these clothes. नहीं, क्या तुम्हें क्या इसमें तुम्हें कितनी प्यारी तस्वीरें क्यों, And क्या she है? looks. ये तो अच्छी है बाबा की तस्वीर। यासिर अरफात ने ना वो एक हार पहनाया वो भी मैंने देखी और हुई है। मेरे पास है, वो भी मैंने जो देखी हुई है। पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स ने इजरायली जेल में बनाए थे मोतियों से। दैट इज द पैलेस्टीनियन फ्लैग, 3 colors. We had gone to another trip of Middle East. Then we had gone to Baghdad and Beirut, Syria and Egypt. जब तुम्हें पीछे तुम बीमार भी हो गई थी,
जब इसको जो अपेंडिक्स का हुआ था, ये तब की बात। और फिर आप देर से भी आए थे। हाँ, वी वर हेल्ड अप वहाँ पे कुछ चल के बात हो गई थी। योर वेडिंग रिसेप्शन। ये तो थारू की है, ये कब किया थारू की? ये आई थिंक मम्मी शी वाज अबाउट जब चलती नहीं थी। अनीता, जल्दी आओ बेटा, नीचे से सामान भी लेना है, आओ। Very nice fortnightly report. Very nice fortnightly report of Sara. क्या लिखा है? Smart girl, work is good, has improved handwriting, should keep it up, है ना? Attendance, punctuality, सब कुछ ठीक है। Fortnightly report जो है, very nice. ऐसे करेंगे, थोड़ा सा टीवी देख लेना, और वो जो किताब है बुक ऑफ नॉलेज वाली, वो भी देख लेना। फिर बेटा वो जो क्वेश्चन है वो स्पेसशिप वाले, वो तो याद करने हैं ना। फिर अगला हिस्सा फिर यूएफओ वाला है, वो भी करना है। कल याद हो नहीं गए थोड़े से? हाँ, लिखते लिखते हाँ हो गए ना। नो, और ले आओ क्या चावल? लो, बस लो चाहिए। अब आराम से डालूंगी, गिरेगा नहीं। बस चल। जब वो अंदर घुसे, खाने की यूं तोड़ी, इतनी देर में 4 आदमी आ गए। बीबी जी ने उत्थे ही छोड़ना, तो उन्होंने कहना, हाँ वो मुझे याद है, दिल कमेंट से कि वो जी हमारी तो लड़की को किसी ने जला दिया, वो तो केस ही नहीं रजिस्टर कर रहे। बीजी कहेंगे अच्छा बैठो, फिर कल मैं चलती हूँ, मेरे साथ चलो। लाइक दैट शील बी गोइंग। हमेशा मोस्टली ऐसे ही आते थे कि या तो नौकरी लगवा दो, या मोस्टली जिनकी बेटियों को मोस्टली जलाया जलोए का था, दहेज दूज का, डाउरी के कोई भी प्रॉब्लम हो। लेकिन ये ना भूलो कि हमारी माँ जेलों में जाना, सत्याग्रह करना, इतने बच्चे पैदा भी करना, फॉर ए वुमन इट इज नॉट। सीती थी खुद, अच्छे अच्छे कॉलर बना के कपड़े जो हमारे थे, बीजी खुद सीती थी। स्मोकिंग, साबन घर बनाना, अचार, चटनी, मुरब्बे जदों भी, और फिर मिठाई। कभी बाजार की मिठाई तो साढ़े का आई नहीं सी। अंदर जो था ना एक फाइन, एक गृहिणी की बीजी थी, वो बीजी थी अंदर से। एज ए मदर ऑल्सो शी वांटेड टू बी ए परफेक्ट मदर। मिस टीडियस, भाई मिस टीडियस प्लेनेट रासोद एक बहुत अच्छा है। चलो निकले। जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल मिनिस्ट्रीज बदलती रही हैं, सभी उनकी इज्जत करते थे
उनको पता है जब उनको मिलने उन्होंने चंडीगढ़ आना है, उन्होंने अपने पर्सनल या अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगने आना। इंदिरा गांधी पर्सनली बीजी को राज्यसभा लेके गई। उन दिनों में यूपी के इलेक्शन होने वाले थे, तो बीजी को उन्होंने वो एरिया दिया जहाँ पंजाबी पॉपुलेशन रहते हैं और कांग्रेस सीटें हार जाती है। तो बीजी 2 महीने वहाँ यूपी में रहे कि हमें भी नहीं पता वो कहाँ हैं। इलेक्शन के बाद आए, सारी सीटें जिनको इनको भेजा था जीत के, और आते सारी जब राज्यसभा जाने लगे तो गेट में गिर गए। इंदिरा गांधी उनकी डेड बॉडी के पास बैठी रही। हमारे बाबूजी ने बताया इनको तो हार्ट ट्रबल थी। इंदिरा गांधी कहती अगर मुझे मालूम आता तो मैं इनको कभी न भेजती। No, you see, it's never talked. We have never talked about these things. We've never sat together as a family and जब डेथ हुई सब आए, हर एक अपना अपना पर्सनल ग्रीफ लेके वापस चले गए और आपस में बैठ के, इसीलिए लोग बरसियां होती है, इकट्ठे होते हैं, फैमिली में बात करते हैं, हर एक का कैथारसिस भी होता है। और हम लोग तो बहुत ब्रेव फेस लेके सब लोग वापस जाके अपनी अपनी ज़िंदगी में जुट गए। शी वॉज ए वेरी ब्रेव पर्सन। वो हम सभी में वो चीज़ आई है। हम लोग प्रिटेंड करते हैं और प्रिटेंड करते करते बिलीव भी करना शुरू कर देते हैं। हेलो ठीक है मम्मा, ये सारा क्लास आ रहा है मम्मा। हाँ कोई बात नहीं, 1 सेकंड में कुछ नहीं होता क्लास ओके। में। शी इज इन द क्लास। क्या कहती है? कैरियर शी विल टॉक इन 1 hour। अच्छा चलो। You have to be a brave girl. There is so much you have to do in life. You have to be a brave girl. You have to learn to cope on your own. You have to be a brave girl and stop following me around. हेलो, नॉर्थ एवेन्यू तो बोल रही हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਸ਼ਾਟ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ 133 ਨਾਰਥ ਐਵੇਨਿਊ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨੰਬਰ, ਫਿਰ 133 ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ 178 ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। खैर वो शक्ल तो इको जिहियां ने ना सब। देखना ये 135 136 यही है 130, यही है तो The Punjab Political File 1928, CID file number 10294 SP. Chabil Das, height 5 feet 6 inches, thin build, fair complexion, oval face, a clever and dangerous propagandist, appointed principal in 1923 of the now defunct Lahore National College. Has been a teacher and associate of Bhagat Singh and is addressed as Guruji. Chabil Das is an active member of the Naujawan Bharat Sabha that is suspected of revolutionary and anti-government activities. He has written objectionable pamphlets that urge young men of India to follow the example set by Ireland, Russia, Turkey, Egypt and China in their struggle for independence.
My grandfather Chabil Das was subsequently arrested in 1930 by the colonial authorities for making a seditious speech and spent 9 months in prison. In 1942, he was arrested again and served a 3-year prison term. ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, CID ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀ ਔਰ ਦੇਦੇ ਹਾਲੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਦੇਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ, ਉਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਵੀ ਵਰ ਸੋ ਐਂਗਰੀ ਵਿਦ ਹਰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਗੱਡੀ, तो छोड़ो ताला, रहन दो। स्टेशन ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ स्टेशन ਤੇ बड़ी पुलिस, क्योंकि these people were going to be shifted, और काफ़ी देर हो गई। ट्रेन ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਨ ਹੀ ਜੀ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਡੱਬਾ ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀਏ। और ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਖਾਂ ਸੀ they were very close up, मतलब सिर्फ आंखें ही उसमें से नजर आती थी। तो निकले जब लेके तो they didn't allow us to come और कि भी हम करें। जब अंदर ले गए तो बाजी वहाँ उसमें से हम we were all crying। गल तो कोई हो ही नहीं, ना बाजी ने या नहीं बाजी ने शायद क्या होना है कि ठीक हो या तुसी बहादुर बनना, पर असी तो सारे रो ही रहे सीगे। देंदे कवे वन के बील क्या कुछ मतलब so choked, we were all, there was no talking but बस looking at one another and crying। आजा 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 किलो किलो ये देख ये दूध तेरा दूध तो इधर आजा। इसके पैर गीले हो जाएंगे। नहीं कुछ नहीं होता। बाबू जी की जो ग्रेट बात थी कि वो जो भी किताब पढ़ते थे वो हमें सुनाते थे। बाबू जी ने मुझे इकबाल की शायरी बताई थी, लेनिन के ऊपर एक कविता लिखी सर मोहम्मद इकबाल ने, और फिर उन्होंने एक गुरु नानक पे लिखी, फिर उठी आवाज़ तौहीद की पंजाब से। वो मुझे सब पढ़ के जो भी सुनाया, किसने सुनाया? बीबी ने तो नहीं सुनाया। बीबी ने संस्कृत का पढ़ाया और कहते हो कोई याद करके आ, संस्कृत ग्रामर ने तो धूप में खड़ी हो जा। हाँ, हमारे घर में हवन ज़रूर होता था। पीजी करती थी तो सवेरे से अपने मूढ़े पीजी रखेंगी, सामग्री रखेंगी, फिर बाबूजी को बुलाती थी, आ जाओ भाई हुन आ जाओ। फिर बाबूजी धीरे से कहते थे अब अपना आर्य समाज का शुरू करने लगी। ही वुड जस्ट लाफ एंड स्माइल बट ही वुड सिट। हाँ, I'm not sure if he was a believer. He was not a believer. No, he was an atheist. No. But for her sake, he will sit. ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੂਮਨਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ। ਐਮਫੈਸਿਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਗੁਲਾਮ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਗੁਲਾਮ। सबसे पहली एजुकेशन जो ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस ने लाहौर में लॉन्च की वो थी हिंदू कोड बिल के फेवर में। तो जितनी सनातन धर्म और इवन आर्य समाज ये इंस्टीट्यूशन थी, इन्होंने प्रोटेस्ट किए, उसकी कोड बिल की कॉपियाँ जलाई। तो बीजी ने एक मीटिंग एड्रैस की थी, उत्थे उन्होंने पथराव किया, बीजी दे चोट भी लगी। कहते जी सीता दे भी 4 खत्म करना चाहते हैं।
In a vast rambling house, a woman retained one room for herself. Her daughter too always had a room of her own, and in turn gave her little girl similar space. The only advice she gave to the girl was to walk alone and walk proud. Over the unfolding years, her daughter almost forgot the words, but never quite. At the most unexpected moments, they would tiptoe in and turn her world inside out. सच्ची गल ये है कि इंटेलेक्चुअली बाऊजी वॉज ए डोमिनेंट फैक्टर बट डोंट फॉरगेट कि in every way it was my mother who dominated. He was very dependent on Biji for everything. वो थी धुरी, कपड़े तक वो कट के दिंदे सी वो ਉਹ ਧੁਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੀ, ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਢ बीजी ਬੀਜੀ एक्शन वो थी करती थी। ਵੈਸੇ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਬੀਜੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं बट शी वॉज फेमिनिन इनफ तो कि ज़रा से सेकंड फिडल करके उसके बाद तो फर्स्ट आगे आके गुरा के भी पढ़ जाती थी बट शी न्यू व्हेन टू रिट्रीट एंड व्हेन टू एडवांस। लड़ते के ये थे कि मेन चीज़ तो ये थी कि बीजी की सेहत शी ओवर एक्साइटेड जो मेरे फादर को ये होता था कि भाई नहीं ये बंद करो रंडी रोने थोड़े हर वेले लोग आ रहे ने तुसी आराम करो बेसिकली तो उनको कंसर्न भी था ना उनके लिए नहीं कंसर्न बेटे कोई ऐसी शादी नहीं जिसमें लड़ाई नहीं होती और जो कहते लड़ाई नहीं होती देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट मैरिज। दूसरी एक चीज़ है एक पीरियड में वो रेवोल्यूशनरी थे कुछ थे जब उन्होंने बिल्कुल ये कर लिया कि अब कोई एक्टिव वो नहीं करना रोल और तो और इवन फाइनेंशियल घर को चलाने के लिए भी रोल नहीं करना तो फिर हर चीज़ बीजी ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗੇ ਸੀ ਕੰਨਿਆ ਬੀਜੀ ਦੀ ਬਾਬੂ ਮਮਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजी ਦੀ ਕੋਈ वर्क ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ कॉन्फ्रेंस होनी भी लेबर कॉन्फ्रेंस ये है PWD एंड BLR एंड कौन से वर्कर्स यूनियन होशियारपुर Sanjeeva Reddy Asika was the labor minister and whenever labor minister used to come to Jalandhar then we used to have a dinner in our house here. फिर स्टेशन पे बैठा रिसीव करके नहीं हो गया तो बस का अमरनाथ जी भी खड़े हैं ऐसा अरे भैया ये देखो ने बानू ने झुके भाई हाँ ये पप्पू ये तो बछड़ा है। हाँ ये बछड़ा ये भी पप्पू है सारे दी करा लेने कॉपी तो एक बारी अच्छा इसमें आप कौन हो और मम्मा कौन है? ये तो ये देखो ना ये तो शक्ल तो पता ये मैं हूँ ये मोमा ये देखना ये तो फर्क तो है ये देख ये ना फर्क तो तो पता लगता है ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ हुई तू और मैं ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖ 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 ਲੱਗੀ तो एक ढाबा ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਕੋ ਤੇ ਬਈ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਉੱਥੇ ਮੀਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਟ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ मैंने कहा कि मैं क्या जी नहीं मैं ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੱਡ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਬਾਊ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਔਰ ਅਗਰ ਬੀਜੀ ਨਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਕੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਾ नहीं पुल पर ही मेरे अजय तक भी अंदर वो है। वन से रिमेंबर हम पता नहीं उसकी शादी किसी की शादी में दिल्ली गए थे आई वेंट विद हिम बीजी पहले चले गए थे रास्ते में किसी ने कोई
कोई पॉलिटिक्स की बात की, बाबूजी अपनी सोटी लेके वो नेहरू ऐसे, एंड इट यूज्ड टू बी, आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी एम्बैरेसिंग to travel with him in the bus because people will start looking and I didn't know where to look. और हम बाबूजी को चुप करा रहे, बड़ी मुश्किल से 3 बंदे उनको पकड़ के चुप कराते थे. मेरे साथ तो कभी वो ऐसे गुस्से में कभी नहीं बोले. वो नहीं, ये तो इसके साथ क्या होते, ये तो उनकी दुलारा आंखों का तारा, वो एड्रेस भी करते थे, मेरा प्यारा आंखों का दुलारा प्रिय अशोक जी, जैसे उन्होंने हमें कभी पत्र नहीं. हम तो कहते थे बाबूजी को चाहे आप कुछ कहते रहो, आप जो तीनों जितने आप डिबेट्स वगैरह बाजी की तैयार कराई हुई स्पीच है, तो उसका मतलब होता था कि श्योर शॉट वो एक किस्म का फर्स्ट प्राइज मिलेगा. हम बाजी को इस वक्त हम बैठे हुए माता पिता का एक विश्लेषण ਅਸੀਂ कर रहे हैं, बैठे एनालिसिस. इस वक्त हम कोई डिसोन नहीं कर रहे, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे. ਇਹ ਜਦ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ. ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ. नानी जी ने आपके लिए ऐसा नहीं कहा था नाना जी? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ. ਪਰ ਬੀਜੀ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਨੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ she could not compensate. Even if she wanted, she could not compensate. She was too busy. My mother, yes, was always a model, you know. She was an inspiration. और मेरा अपना ख्याल है कि जो मेरी जिंदगी है ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਬੀਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂ. I would not like myself to be my like mother. I would first give my priorities to my children. The way I have, I think I've been deprived of. Even if you try, you can't be like your mother. No, this is what I'm saying, that I felt that I was so deprived of her love. You see, all these had all of them with each other. Maybe that's the reason. 4 of them were there. They had their nani, they had dadi. I was all the time with servant. I used to miss my mother. And that's the reason I would not leave my children. I've never left them. For me, that's the first priority. Mama, where are you? The whole week on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, I even need to make a folder for my file. I'll give you the whole homework, GK की assignment है, वो मैम कल I felt that the time had come that I needed to do something other than taking care of Sarah. I think in those 9 years, if you calculate, there would be only about 15 or 20 days where I have not been at home when she's come from school. Actually at the door. Must have been quite tough on her. Must be tough on her. I was not happy at all. And I think that was reflecting on even Sarah somewhere. I was very edgy and very unhappy. And also I was, I think, getting too many complexes. And What kind of complexes? well, that I'm underutilizing my talent and also underconfidence बहुत हो रहा था. I was very underconfident. I had become very underconfident. I couldn't interact with people and it was really becoming very acute. I was getting in a major depression and You used to work out before you got married. But then in a when, news agency. Yeah, but then when Sarah was born, it was a decision I took that no, I will be at home. Mummy used to be, whatever her reasons, whatever, but she could not come home. And she could not be home till late in the evening. And that really built in I was very insecure and I used to be waiting for her. So I felt that maybe, I felt that Sarah should not go through that.
Mummy was not happy somewhere, and Mummy was like, as if it's sometimes a burden on her, and she was very detached. Whereas Papa was completely attached. Not that she didn't love us, because she loves us a lot. मम्मा आ जाएगी कोई 6:30 बजे तक, है ना? You have to limit somewhere. I won't say limit your ambitions, but limit your activities. Yes, even limiting for a woman, I think it is limiting ambitions also to some extent. आपने अपनी ambitions limit की थी? कुछ हद तक. क्या ambitions limit की? To go in active politics. Yes, that was in my blood. Because it was, my mother was so active in politics, and I think if I I had my way, I did not have a family and all that, I would have then been dedicated to my voters, and then I would have stayed there. Then what would have happened to my family? Do you think my father had to limit his ambitions? Did he? He had to limit for what? To sacrifice for what? For the sake of children, or I don't think. I don't think, because your father, when he found that journalism, he got sick of journalism, maybe it was too frustrating and disappointing. He left it, he switched on to creative writing and to Urdu, and maybe you are not aware, you were small, he used to go and lock himself, and he could finish his novels and things and all that. This to a large extent an unequal society we live in. I have a firm feeling. My mother had to suffer, being a woman. Sometimes you have to play a second fiddle. Yes, I did almost all his correspondence and things, and even making his appointments, and then but a time came when I strongly resented. I said, nothing doing. I will not. I am not your personal secretary that you do. I said, you either keep a person or you do it yourself. I can't be your assistant doing things. But did he expect you to be? Saba, they don't expect, it is taken for granted few things. And I am telling you, however good the men folks are, they live in a world of their own. All of them. There are very few who think that yes, their wives are, they are equal partners. It is not only a man's privilege to be disorderly or to have leisure and to have an afternoon siesta and to sit. I think woman also. I personally think woman needs it more. Seeing her, biology, and she needs more rest. But we don't get it. We get very tired. That's why I wanted Samira, when coming back to it, related that she should be something. Besides being a good wife or a mother, she has to be something on her own. Yes, she was doing qualified
होते हुए भी she was not doing anything worthwhile. And I personally thought that she should do something. She should make her life more meaningful. And Samira has to do something to be on your own. If you can do, if you are not just, you are not incapable. It's important to take care of your child. But I think here also an optimum point comes. Sara is getting older and more independent. And Samira has to do something to be on your own. So many years have gone by. I don't know what to talk. You were not there. You were not there all the time. You were not there. समीरा देखो एक चीज है, मैं एक बात बताऊं, बट यू विल रिकॉल व्हाई आई वाज नॉट देयर. आई नो जो बचपन की इनसिक्योरिटी होती है वो अंदर बैठ जाती है और उससे और बहुत सी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है ना लाइफ में. लेकिन आपने अब कभी ये रिफ्लेक्शन की है, सोचा है कि अगर मम्मी नहीं थी तो उसकी क्या वजह थी? बहुत सोचा है. हाँ, बहुत सोचा है about it. And हाँ. maybe you had your own reasons. Maybe you had your own reasons. Maybe you had your own problems. And maybe there were lots of problems. But still, I feel whatever, I'm not blaming you. Somewhere you must have been very unhappy, mummy. And maybe that, maybe your whole psyche or whatever, हमारे पे भी reflect हो रही हो, कहीं हमको भी होती होगी उसकी घबराहट. No, but I've been thinking about it, and I think that I've always held mummy. I've always felt very somewhere tense and unresolved about mummy not being there. And I think we both, only thing is you opened up about it. I have not even ever spoken about it. I've never spoken about it. My things, my insecurities, my thing of fibbing, my thing of lying, why were they there? I mean, and knowingly doing it, that's it, like a compulsive thing. Why should it be there? I mean, I was like, what? I used to cycle down to see where you are. पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप दोनों से. सबा, I want you to be little composed, both of you. अब now don't get emotional. I just जब से समीरा ये फिल्म सीता's फैमिली का बन रही है, मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ ना. सबा, तुमने मुझसे बहुत से सवाल पूछे, लेकिन मैं एक बुनियादी सवाल आपसे पूछती हूँ. तो यू नीडेड ओनली मम्मी. मम्मी का ही काम था हर चीज, सिर्फ हर चीज मम्मी करे. एक मिनट समीरा, व्हाई नॉट पापा ऑल्सो? मम्मा माँ की तभी बच्चे इनसिक्योर फील करते अगर माँ ना दे वो पूरा की नहीं है, दोनों पेरेंट्स की. बट जो भी whatever the reasoning, whatever, बट वो बच्चे पे आता तो बच्चे पे ही है ना, आता तो बच्चे पे ही है ना, whatever. But I think it comes on the child. So it's not fair, you know, it's not fair on the child. I'm not denying कि बच्चे पे नहीं आता. Fault or whoever's fault नहीं. मेरा सवाल और था. How much you expected your father who loved you so much to do the household work? How much you expected of him to maintain the house? Yeah, maybe you're right. You were proud of the house कि हमारा घर बड़ा अच्छा है, हमारा हर कमरा बड़ा अच्छा है. किसने किया वो सब? कौन रखता था? जिस दिन कोई मेड सर्वेंट काम करने नहीं आती थी, आपने कभी अपने फादर को झाड़ू और पोछा उठा के देखा करता? मैं आपको बुनियादी सवाल पूछ किया. सभी कुछ माँ का है, माँ ही करे, माँ प्यार भी दे, माँ सेंसिटिव बच्चों का वो भी ध्यान रखिए, माँ ये भी देखे कि बच्चों की कहीं फीलिंग कोई इंजर तो नहीं हो रही, माँ ही उनके कपड़ों को भी देखे, माँ उनकी पढ़ाई में भी देखे. मुझे सबा का पता है कि जब इसने बीए ऑनर्स का इम्तहान देना था, सारी रात ये कहती थी, इसने क्यों नहीं कभी कहा कि पापा तुम मेरे पास बैठो. आप ठीक है, आप अपने फादर को दोनों प्यार करते, मिस करते हो, मैं को अच्छा लगता है. लेकिन मुझे कई बार ये दुख ज़रूर होता है सबा
समूह ये भी कि आप ये समझ के बिना समझे हुए बीइंग वुमन कि हमारी माँ की आफ्टर ऑल क्या कैसे लड़ रही थी, क्या मजबूरियाँ थी। मैं लड़ना ही लफ्ज़ कहूँगी। ए वुमन हैज़ टू फाइट ऑन मैनी मैनी फ्रंट्स। Mama, you're misunderstanding. It's not fair because ये नहीं था because मैं एक्यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं तो हम सोचे ना कि बुनियादी चीज क्या गलत है। औरतों को इंफीरियर समझा जाता है और वो इनग्रेन्ड है। जब लड़की पैदा ही होती है, चाहे वो अब पढ़ी लिखी भी हो, वो अपने आप को एक हीन भावना ही से बढ़ती है। तो लड़कियां जो है घर में क्या होता है, लड़कियां हो या लड़के हों, लेकिन लड़कियां भी वो माँ को वो दर्जा नहीं देती, हमेशा माँ को बाप से इन्फीरियर समझती हैं, माँ के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। तभी ये सारे मसले जो हैं वो पैदा होते हैं। मैं समझती हूँ कि इन्हीं को अगर हमें पता नहीं अभी ये लड़ाई कब तक चलेगी। शायद सारा ने कहा कि नहीं आई फील सुपीरियर, वो तो बराबर का भी दर्जा नहीं दे रही हो। मेरा आई विश कि सारा जो सक्सीड करेगी तो फिर वो बेचारी सीता जहाँ धक्के खाती रही, वो करती रही, सारा सक्सेसफुल होगी। आई मैं होंगी नहीं होंगी, बट आई फील प्राउड। But we are very proud of you, Mama. We are. The way you've stood by me and through this making of this film, and the way you've actually made this film possible. The film wouldn't have been possible without you, Mom. Listen, I'm out of the house because of her. It's only because of her that I'm doing this course. I couldn't have done it. I couldn't stand on my 2 feet again. मैंने सारा कहती मम्मा तो नहीं है ना, फिर ये सारा मेरा करने के लिए। मैंने कहा माँ की माँ तो है ना, कर रही है ना तेरे लिए, क्यों सारा ठीक है ना, नानी है ना। Done. I've written my signature. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mama. Happy birthday to you. बहन जी बिल्कुल जरा गया नहीं, कहाँ से बनवाया ये? खाना कोई नहीं, भाभी को दे रहे भाई, ऐसा नहीं है। ये तो क्रोनोलॉजिकल, उसमें तो पहले आती ना। ये फिर अपना बेटा दामाद है, वो इस वक्त कैमरामैन वाली बात नहीं है। ये केक कटने Organize the whole show. Without whose help this could not have been possible. बिल्कुल वैसी स्माइल है। हाँ, हाँ, ये केक अभी खाने के बाद खाते हैं। चलो अब खाना कुर्सी अभी दे दे। बहन जी नहीं, खून नहीं खा, तुसी और केक नहीं खाना।